यस दोस्तों, आज ये 7th लेक्चर सीरीज हमें लेनी है। इस केस में ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दे रहा हूँ। व्हाट आर दीज क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू। अब ये क्वेश्चंस हैं फॉर्मूली फ्रॉम, आई मीन क्वेश्चन मीन्स ये फॉर्मूली हैं जो कि प्रोडक्ट से सम की तरफ या डिफरेंस की तरफ, मीन्स प्रोडक्ट से वी कैन ऑब्टेन आइदर एडिशन और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। जो फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इनकी हेल्प से क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको याद है तो। क्वेश्चन इज फॉर एग्जाम्पल टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये चार जो फॉर्मूले हैं फर्स्ट वाले, ये एडिशन वाले हैं, सम वाले के फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम and difference also. There are two difference formulae and two are sum formulae. Okay, so first 1 and 2, sum difference, sum difference, or you may say that first and third are from product to sum. Okay, and second and fourth they are from product to difference. So product to sum, product to difference. ये फॉर्मूले आपको आज डिस्कस करने हैं, हमें डिस्कस करने समझने हैं आपको किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको। और देन फ्रॉम सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसी इन्हीं फॉर्मूले से ये आपको ऑब्टेन करने हैं। अप टू 8th, फ्रॉम 5th to 8th दे आर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। फर्स्ट इज आर फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस, सेकेंड इज फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। बाय सोर्स ओके, दोनों को और एक दूसरे के अपोजिट है। इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन है आपके 9th to 18, 9 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है, लेक्चर सीरीज 8th में, उसमें आपको और क्वेश्चन मिलेंगे जो इस पर बेस्ड है। ओके, बिकॉज मैंने क्वेश्चन काफी नोट कर रखे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से क्लास स्टडीज में, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने काफी रिप्लाई दिया हुआ, तो वो क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए। दो क्वेश्चन आर कलेक्टेड, वो क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूँगा। कुछ क्वेश्चन मैंने 9 ले लिए हैं जिससे कि ये टॉपिक इलस्ट्रेट हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस तरह से आप उनको सॉल्व करें। ऑलराइट, क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रोडक्ट टू सम एंड प्रोडक्ट डिफरेंस एंड सम टू डिफरेंस एंड सम टू सम टू प्रोडक्ट एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। Sum, this is sum sin C plus sin D, and this difference sin C minus sin D equal to product फॉर्म किस तरह आते हैं। ये क्वेश्चन को 1 by 1 में करता हूँ। उसके बाद में देखिए आप उन पर बेस्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं फ्रॉम 9 to 18। दे विल इलस्ट्रेट यू हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूले टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में भी लाएंगे क्वेश्चन जो बेस्ड है, इससे क्या आपको एक एक टॉपिक क्लियर होगा, मीन्स पॉइंट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दिया था फॉर्मूले फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। इट मे बी सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस and from sum and difference to product of trigonometric functions. These are the two types of topics today. Okay, so let me take one by one. Question number 1 में कहता है 2 sin A into cos B की वैल्यू sin A plus B plus sin A minus B होता है। How it is there? Let me just prove it and then realize solution or proof, solution or proof। अब आपने 5th लेक्चर सीरीज में हमने कराया था सम फॉर्मूले, व्हाट आर द सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फ्रॉम देयर सम फॉर्मूले एंड डिफरेंस फॉर्मूले sin A minus B, sin A plus B, इनकी वैल्यूज आपको हम बता चुके हैं लेक्चर सीरीज 5 में, आप उसको देख सकते हैं। फ्रॉम देयर वी कैन गेट फॉर्मूले फॉर दी sin A plus B and sin A minus B। लेट मी टेक sin, okay, we have
Sin A plus B, or we know from sum and difference formulae of trigonometric functions. ये आपको मालूम है, sin A plus B की वैल्यू होती थी sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फर्स्ट थिंग होती थी, दिस इज सम फॉर्मूला और एडिशन फॉर्मूला। तो ये सम फॉर्मूला हम 5th लेक्चर सीरीज में कर चुके हैं, 5वें नंबर में। तो आप देखिए वहाँ से भी आपको आ सकता है। हाउ हमने ये प्रूव किया था ज्योमेट्रिकली आपको फिगर की हेल्प से प्रूव किया था किस तरह sin A plus B की वैल्यू एंगल A plus B लेके किस तरह सॉल्व किया था sin A cos B plus cos A sin। तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू ये होती है। ओके, नाउ एंड sin A minus B also we proved there with the help of geometrical figure. Okay, figure. So sin A minus B was just sin A cos B. Only minus sign will come. यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और ये प्लस है तो ये प्लस होता है into cos A sin B. सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, adding first and second, we get what? Adding first and second, we get, so here that is sin A plus B on the left hand side plus we are adding the sin A minus B on the right hand side। आप देख रहे हैं sin A cos B plus cos A sin B, and here sin A cos B, these two will be added and these two will be cancelled out because this is negative और positive। तो आप देख सकते हैं only ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। दिस इज ट्वाइस sin A into cos B, the first terms are added up, ट्वाइस sin A cos B ऐड करने पर इन दोनों फॉर्मूला, इसका मतलब ये वैल्यू आपने देखा, और दिस इंप्लाई दैट 2 sin A, or you can write or not implies this 2 sin A cos B equal to sin A plus B plus sin A minus B। देखा आपने कि ये सेम फॉर्मूला आ जाता है, sin A plus B sin A minus B की वैल्यू 2 sin A cos B, प्रोडक्ट फॉर्मूला टू सम। So this is good, hence good. This is the right hand side, or we can write this is the right hand side, ये right hand side आ जाती है। इस तरह से ये प्रूव करना है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी इजी टू रिमेंबर, 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B, I mean sum of sine functions, sine addition and sum and difference formula, and then they are added up, that will give us 2 sin A cos B, sin A cos B, 2 sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B। ये यहाँ से प्रूव। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला दूसरा क्या कहता है, सेकंड नंबर फॉर्मूला, व्हाट डज इट से, क्या है ये सेकंड फॉर्मूला, लेट मी चेक दैट आल्सो। ओके, वो भी सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, maybe product formula, here it says cos A sin B, we have to do is equal to sin A plus B minus sin A minus B। Again, this is sin A plus B, sin A minus B, difference, if it is minus sign, so this is only minus sin A। So twice cos A sin B, first cos A then sin B। In the first one it was sin first then cos, so sin A cos B then plus sin, cos A sin B then it is negative sign or different sign। This we have to remember the formula। Okay, so let me prove this also, proof or solution। Again, since sin A plus B, again
or we have sum and difference formula. We have sum and difference formulae of trigonometric functions. We can write like this: of trigonometric functions. तो ये वाला सेम लिखा आपने, sin a cos b plus cos a sin b. This is first equation number. And sin a minus b, we always write like this, and sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b. ये आपको लेक्चर सीरीज 5 में डिस्कस किया हुआ, प्लीज सी देयर, यू विल फाइंड everything how we explain that geometrically. Now come to the point. Adding, from addition we get that. Now subtracting second from first. On subtraction or subtracting second equation from first. So we get, what do we get here? अब देखें, suppose whenever we subtract something, okay, then the lower term, for example, if I write here 25 10 minus करना है, तो we write here minus sign, it is plus sign, then we subtract. So lower sign, if it is plus sign, suppose this is already minus sign, okay, we have to just add them, or we have to subtract second from first, then we will make it positive, both will be added up. For example, 25, okay, and this is minus sign minus 10, like this. We are subtracting minus 10 from 25. It means we are subtracting this sign will make it positive. Minus 10 is subtracted from 25 in mathematics. Similarly, if minus sign is there, then it will become positive. But in this case, we have to subtract second equation from the first one. What we do, we just put here, okay, this minus sign, so this is plus sign, sin a minus b is sign, before sign there is no sign, so it is positive. Here also it is positive, then positive, it is negative, now it is plus. Now this is negative, this is positive, these two are cancelled out, these two are added up. So here we will get sin a plus b minus, ये आपको मिलता है a minus b की वैल्यू आती है ये twice of cos a into sin b. Okay, so this formula for 2 cos a into sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. This is difference formula from product to difference. This is from product to difference formula. Okay, this is second question we have done. And proved. So this is the right hand side. Let's see, right hand side or hence proved. Okay, so this is second formula. This is from product to difference formula. Product to difference, product to sum. This we are proving here. So this is question number 2. सेकंड क्वेश्चन हमने किया, इसके बाद देखते हैं थर्ड फॉर्मूला क्या है. थर्ड एंड फोर्थ आर बेस्ड ऑन कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी. इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 3. दिस इज कॉस ए कॉस बी. कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस a plus b, okay, and plus cos a minus b. This is what the third formula is. Okay, solution or proof of this. Now cos a plus b and cos a minus b we discussed about. इसमें हमने पढ़ाया था कि अगर cos में प्लस साइन होता है a plus b फॉर एग्जाम्पल, देन आगे माइनस साइन आएगा, और अगर माइनस साइन पहले होता है तो बाद में प्लस साइन होगा.
This is just only logic here. Remember, in case of cos, it is plus minus minus plus. In case of sin, it is plus plus sin minus minus. ये याद रखना है आपको. देखिए साइन में अगर ये प्लस साइन था ए प्लस बी, अच्छा उसका ओपन किया ये दूसरा फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. बट इन केस ऑफ ए प्लस बी व्हेन ओपन, तो बात की साइन ए प्लस बी, तो प्लस साइन आता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी. In case of sin A minus B plus sin A cos B minus cos A sin, or by negative sign. In case of cos, if we open cos A plus B, we can B no from sum and difference formula Guys, I will clarify this in Hindi, but write in English. This is my position here. But most of the students are writing in English, but they are understanding in Hindi. That's why I have taken this topic. The students requested me to write in English, no problem. But you have to speak in Hindi. So that's why I am taking this topic in Hindi speaking. But for Hindi version, I have taken it as Hindi version. But questions are solved in English writing because that is required by the students. Okay? So students is write in English, but we have to understand that how the topic is being clarified, how it is to be solved. So that is the point. How it is to be proved. English to prove and other things should be spoken in Hindi. Again, writing में आप English use कर सकते हैं. So that's why I'm taking this. Let me take. Okay. So from this formula of trigonometric functions, sum and difference formula, we know that cos A plus B. What is that? This is cos A cos B minus. If it is plus sign, then it is minus sin A sin B. Okay, in case of difference A minus B, then it will be cos A cos B plus sin A sin B. That is the point here. A plus minus minus plus. This we have to remember. This is first equation we have to take, and this is second equation. ये आपको fifth lecture series में किया होगा. Okay, all these addition and sum and difference formula we have discussed here. आप आते हैं किस तरह से सॉल्व करना है. अब इनको ऐड करने पर adding first and second, adding or on addition of first and second, or adding first and second equations we get क्या मिलता है? cos A plus B plus cos A minus B, okay, is equal to, now again these two cancel out because it's negative, is positive, only cos A cos B, addition of these two same terms are there, they are added up, twice cos A into cos B, or 2 cos A cos B equal to, we have added them, okay, cos A plus B plus cos A minus B. Okay, this is third question number 3, or third formula. This third formula is very important. Just to remember that if it is twice cos A cos B, then it is plus 1. Okay, so this is your third one, or we can say this is right hand side. Right hand side is obtained to cos A cos B equal to cos A plus B plus cos A minus B. Right hand side is hence proved, or hence this is the third formula which we have to remember. ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब फॉर्मूले यूज होते हैं, आपको क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए. So there we have require them, okay? Because whenever I teach students for different classes, engineering classes, BTech and BSc and MSc, there students ask me, or maybe in management classes, because sometimes management classes also involve some questions based on trigonometry. Okay, there quantitative techniques and quantitative methods are there. Those quantitative methods and quantitative techniques, we take sometimes integration and differentiation also. Okay, in operations research also there are a number of questions based on
I mean these trigonometric problems. Okay, so sometimes we calculate some functions based on trigonometry. So that is the point here. These formulae are remembered there. Okay, so I just request the student ये प्लीज आप इनसे याद रखिए फॉर्मूले हैं सभी यूज होते हैं क्योंकि इनके हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अदरवाइज अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम ओके सो आई जस्ट रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स दैट प्लीज रिमेंबर देम अगेन एंड अगेन सॉल्व देम okay and remind them so that or you have to remind yourself so that you can understand that now let me take question number 4 this is the difference formula for cos A plus B and cos A minus B. What is that is very important one. That is very tricky one. Let me take it. Okay, now question number 4. This says sin A product formula to sin A sin B is equal to, this is very important. What is that? Here first comes cos A minus cos A plus B. That is very important. In other three, first coming A plus B, it was coming first. Then different sign with cos A minus B. I mean, so this is different from other three. That is to be remembered. Because this cos A plus B is coming first time. Or if we take this first and then ये, because अगर हम इसको पहले लिखते हैं, इसी रूटीन में इसको बाद में लिखते हैं. cos A minus B बाद में लिखते हैं, cos A plus B minus cos A minus B लिखते हैं. तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस टू साइन ए साइन बी हो जाएगा दैट वे ऑल्सो कैन बी रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर either this way or take this negative sign or multiply by the negative sign both sides. It will be positive, it will be negative. So cos A plus B minus cos A minus B की वैल्यू इक्वल टू माइनस टू साइन ए साइन बी आती है. इस तरह याद कर सकते हैं. So that's the point. Now come to solution or proof of this equation. Again we have from sum and difference. We only write this logic. This, I mean, the reason why we are taking this. Write the reason first. Okay, we have from sum and difference formulae of trigonometric functions. What is that? Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Try to understand. In case of cos A plus B, it is minus sin, and cos A minus B is equal to cos A cos B is plus sin A sin B. ओके, ये होता है. इस तरह से इन दोनों को आप याद रखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड. इफ इट इज प्लस माइनस एंड माइनस प्लस डिफरेंस. अगेन नाउ subtracting. Okay, if I subtract first from second, then it will become positive. Then these two will be positive, this is negative. Let me subtract first from second. If subtracting, the same result will be obtained. Sorry, subtracting first from second, we get. Now let me write them properly. First write second. This is cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. This is second equation written down first. Then first one cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Now subtract. This is first equation. Subtracting first from second. Now we see here this is minus sign. It will become plus. When we subtract, the lower terms will be, the signs of them will be changed. उनके साइन चेंज हो जाते हैं. अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है. This is also minus sign. What we see here, cos A minus B minus cos
ए प्लस बी द लेफ्ट हैंड साइड इधर आता है, इधर क्या आता है, ए प्लस वन माइनस अब टर्म ऊपर वाला प्लस एंड ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों एडेड अप होते हैं। क्यों? सिमिलर टर्म्स हो गए, ये भी एडिशन हो रहा है ए प्लस वन, देयर आर टू साइन ए इनटू साइन बी। ओके, और वी कैन राइट हियर टू साइन ए साइन बी is equal to cos A minus B minus cos A plus B, hence put, or this is equal to right hand side, hence put. Okay, this is how we have to do this. Okay, prove them. So these have been proved now. इस तरह से आप उनको प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूले, तो चारों फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि इनकी हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, तो प्लीज इनको याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन उन पर बेस्ड अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, समझ में नहीं आते फिर क्या करना है। ओके, तो उनको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर देम, follow this. Now come to the next question. Now other 4 questions, not 5 onwards, 5 to 8 questions. They are transformed from the first 4 questions. उन क्वेश्चन से ही हमने ये निकाले हैं, तो इस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। और देखिए फ्रॉम 5th question to 8th question. Here we have to choose 5th number is prove the following sum and difference formula. Now from sum and difference to product, this is the transformation of the first one. Now transformation right here, transformation of sum and difference formulae to product formula, to product, or let me take to product form. This is the from 5 to 8 question. Okay, now question number 5. What does it say? It says prove that sin C plus sin D equal to 2 sin C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2. ये आपको प्रूव करना। अभी आप क्या करते हैं, लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 we have 2 sin A sin B की वैल्यू आती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की वैल्यू है 2 sin A cos B. Sorry, this is 2 sin A cos B. I'm sorry, this is 2 sin A cos B. Sorry for this. This is sin A plus B plus sin A minus B in the first right hand side. This now. In this case, we have taken from plus to, addition to product, that form. Now, so if in this equation, if I put here C, A plus B as C, and A minus B as it is indicated from here, sin C plus sin D is there. Is C in place of A plus B. So substituting, let me put here, substituting A plus B is equal to C and A minus B equal to D, and we see here sin C plus sin D, that means this is value of C, this. Okay, now if I add them, this is suppose first equation और ये सेकंड इक्वेशन हो जाता है, आप इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग we get, or on addition we get this minus plus cancelled out, twice A equal to C plus D.
और a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन टू वैल्यू ऑफ ए। ओके, अगर आप सेपरेट करते हैं सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलता है आपको? इस केस में क्या होगा कि आप इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस एंड ये माइनस, तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट लोअर टर्म को आप साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो, ये माइनस था ये प्लस हो, मीन्स नाउ इट विल बी एडेड अप एंड इट इज नेगेटिव, सो माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट, ट्वाइस बी टू टाइम्स बी की वैल्यू सी माइनस डी आ जाती है और बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन टू, उसे डिवाइड कर दिया, देखा आपने ए एंड बी की वैल्यू आ जाती है। लेट मी नाउ राइट देम व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, ए इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन टू, बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन टू, ये वैल्यू थी। ओके, एंड we have substituted C is equal to A plus B, D is equal to A minus B. Now substituting these four values in this equation, so we get 2 sine, in place of A we have C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2, B की value okay equal to sine, now A plus B is C plus sine A minus B is D, or we can write this in the left hand side, sine C plus sine D की वैल्यू आ जाती है 2 sine C plus D upon 2 into cos C minus D, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, sin C plus sin D equal to 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 into cos C minus D by 2। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, we have replaced A plus B by C and A minus B by D, then we have obtained all these points। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एज्यूम करना है, सब्स्टिट्यूट करना है A plus B की वैल्यू और